Okay, let us start with this. After the long time, it's Masa Shidalvi over here. First of all, hi to all the old students of the 7th school and also to the new students of the Swami Vivekananda School, Sanpada Maharashtra Board. And first of all, what I will say is still I'm getting मुझे message आ रहे from the 7th students for some video of the physics. And I will say sorry for बहुत लोगों को मैंने late reply दिया and the videos are not getting posted, so surely अभी से regular post होगा. I'm saying this again. In the new school मुझे थोड़ा time लगा adjust होने में, but now I will surely post the video step by step. What we have also for the ICSE board, 7, 8, and I will try for the 9th standard also. And Maharashtra board का तो अभी post हो रहा है. So this is for your Maharashtra board. अभी इनका semester का exam है 10th standard. What we have the semester exam over here in the Swami Vivekananda. And 1 to 7 lesson. So this video is for surely for the 1 to 7 lesson. तो जितने भी shortcuts है formula and whatever I feel is important, not just for the same but also for the board, I will explain this today, and I hope this video will be useful. And do share this video because सबको मालूम नहीं कि how much I like science. I am teaching geometry in the school, but surely I like science. And you can surely share with your friends also जिनको मालूम नहीं कि I am a science teacher over here. Okay, so let us start with this. What we have is the lesson number 1, gravitation. So when you see the gravitation, there is a first and the most important question is the Kepler. Board वालों का भी ये बहुत favorite question है. It's really a best question for the 3 mark. It's been a पैसा वसूल and ये board में आ चुका है बहुत बार. So we have draw a good diagram over here, the 3 lines what we have, and also the explanation over here. Now next is the most important formula of the lesson number 1. F is equal to the G m1 m2 upon the D. D square मतलब distance, उसके जगह पे तुम लोग radius square भी लिख सकते हो. And what means ये m1 and m2? m1 में भी earth हो सकता है या moon लो या फिर earth लो, means no matter you take m1 का कुछ भी वैल्यू लो, multiply करके सेम आने वाला है. When you take out your big G, a small g is something a 9.8 of this planet Earth, but big G ये पूरा universal gravity का एक constant है. Now there's been a good formula over there, but बहुत से लोग numerical में mistake करते हैं because basic उनको मालूम नहीं रहता. Otherwise they are forgetting something. I don't know, से मालूम नहीं है. They are not carrying. They are not carrying. 8 क्या तो 9 में carry करो, 9 क्या 10 में carry करो. So what we have here, the basic of the sums. A gravity, अगर कोई भी चीज, if something is falling from the upside down, so the G is in the plus. G is मतलब there is no hard work for coming what we are putting something pressure तो नीचे आने के लिए. There's no pressure given man, वो अपने आप नीचे आएगा. The G is in the plus. But कुछ कोई भी चीज हमको ऊपर लिफ्ट करनी है तो obviously वहाँ पे हमारा power लगेगा. So obviously when something is going up, the G is in the minus. And the another basic what you need in this lesson is कोई भी चीज अगर जगह पे खड़ा है, it has been in motion just like your cycle or the bike or the car. So अगर एक बाइक स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक न्यूट्रल से ही चालू होएगा. क्या it's not like कि डायरेक्ट चौथा गियर डाला डायरेक्ट धूम मचा रहा है. It's not happening like that man. So what we have, the first we have the u and the v, or 2 types of what we have velocity, initial velocity and the final जहाँ पे वो गाड़ी रुकेगी. So what we have is the starting में हमेशा 0 आएगा. इस कंडीशन अप्लाई जमीन पे, आसमान पे नहीं, because उसपे वो बहुत अलग सीन है. And then next thing, a powers and the shuffling. The first thing, अगर मैं किसी भी क्लास में जाता हूँ, first thing I ask is क्या तुम लोगों को shuffling आता है? Just like what we have over here is a upon b is equal to c upon d. When I am asking the class a का वैल्यू क्या है, people become hanging. अरे कुछ numerical is not any digit given and how you are asking the a. What I mean the a is मुझे बस a चाहिए. I don't want a b. तो अगर b को हम लोग denominator left side में and उसको numerator में भेजते तो क्या चाहिए? There has been a answer over here. A is equal to b upon c upon d. B into c upon d is been answer over here. So this is called as the shuffling. आता है तो तुम लोग किसी भी फॉर्मूले के साथ खेल सकते हो. Just like b is equal to I r, v is equal to I r. लेकिन अगर तुम लोग को I का वैल्यू पूछा तो वो I को नीचे लो तो it will be something of v upon I is equal to the r. And then the next thing is the powers. Powers, when you say something other powers is when you say a 10 raised to the minus 1, a 10 raised to the minus 2, what does this mean? Is a 0.1, a 0.01 over there. And उसको काटने के लिए you can multiply by 10, you can multiply by the 100. तो जितना डिजिट ऊपर है and surely ये indices तुम लोग को आना चाहिए इसके लिए. The next important thing in this lesson, when you talk about the lesson, the biggest mistake what the people do is, the student do is,
लेसन बोला ये किया वो किया, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का मालूम नहीं, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितने बार आया मालूम नहीं। दैट इतने सारे लेसन है कि मेरा वो एक दिन में होएगा मालूम नहीं, बट स्टिल करते हो। आई एम नेवर सेइंग टू द होल 7 लेसन, 7 में से 5 करो, लेकिन करेक्ट करो। सो व्हाट यू हैव हियर इज अ वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी मतलब दिस इज योर अर्थ, वेरिएशन इन जी मतलब ग्रेविटी अर्थ के बीच में कितना है। देन व्हाट वी हैव इज द ग्रेविटी अर्थ पे कितना एग्जैक्टली ऑन द लैंड, and then gravity थोड़ा ऊपर in the space कितना maybe 10-20 kilometers. Gravity is zero in the something called as the mid, because d is equal to 0. वो सम दिया नहीं हम लोग ने, डायरेक्ट वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया। and then what we have is if the value of the gravity is x somewhere on the earth, मतलब जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ the value is x, तो थोड़ा ऊपर जाओगे तो it may be x minus y something like this. Okay, the next thing what we have, and बहुत कड़क question है, it can be more than a 3 mark, ये 3 mark का तो ये 4-5 mark का भी आ सकता है। The less probability, बोर्ड में ज्यादा पूछा नहीं है, बोर्ड का ये favorite question है, but I feel ये आना चाहिए। And this time what we have is the free fall जो 9th standard में था। If you remember 9th standard में 3 formula थे न्यूटन के, अगर वो तीनों formula में if you are putting u के जगह a 0 and a की जगह you are putting something called as where we have your g, तो तुम लोग को ये 3 फॉर्मूला मिलेंगे which you have done in the 9th standard। and then the next last but not the least what we have is the escape velocity over here। ये फॉर्मूला बस एक ये लेसन में नहीं बल्कि लेसन नंबर 10 में भी यूज होने वाला है। so what we have is equal to escape velocity, the root of the two what we have is rm upon your r, and ये फॉर्मूला is something missing over here, yes there's something missing over here, one second there's a g over here, a big g over here, a big g, that's all, a big G m। when you talk about the big m and the small m में फिर फर्क पड़ता है, you have to see which are the planets given over here। ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इजी दिखता है, लेकिन लेसन नंबर 10 में वो पूरा पेज भरेगा, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो व्हाट आई विल से ये लेसन के सम आते हैं, तो ऑब्वियसली लेसन नंबर 10 को हाथ लगा, वो सम भी तुम लोग को अपने आप आएंगे। आगे मूविंग बैक टू द लेसन नंबर 2, अगर कोई चीज तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन कमेंट बिलो दिस। Okay, and do follow this what we have the YouTube channel for the Master Ashudalvi, and also on the Instagram पे भी किया तो भी चलेगा for the regular updates। 6 महीना तुम लोग को ये सब का जरूरत पड़ेगा। and don't forget at 10th standard 3 मार्च से तुम लोग का एग्जाम है। okay, lesson number 2 what we have is okay what is name, okay this is the modern periodic table, this is the periodic table। okay, lesson number 2 का कहानी बहुत इजी है। 4 साइंटिस्ट थे जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं था, and so what we have over here is this are some of the scientists जिनको लगा कि कुछ तो करते हैं, means we have the table, तो टेबल को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट we have the dominator, okay 4 साइंटिस्ट, now no joke, it was a joke, that's so fine। और 4 साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट बोलता है कि अगर we have something 10-15 एलिमेंट उसको मिले 10-15 एलिमेंट में से, let us take a first element, let us take a second element, बहुत अलग, उनका प्लस करके जो भी तुम लोगों को एवरेज मिलेगा that can be the answer for the third one, and this is the addition of the mass मतलब अभी m and w में फर्क है, वो बाद में लिखा था मैं, पर let us talk about your mass। दूसरा साइंटिस्ट मतलब उसका तरीका अच्छा था, but the answer were getting error, हर बार ये फॉर्मूला वर्क नहीं हो रहा था, the addition was not working, average was, the mean was not working over here। then the second scientist is the Newland law of the octaves, octaves means a set of the 8, and उसमें बहुत अच्छा है, I like this टेक्स्ट बुक मैन, ये जो अभी का टेक्स्ट बुक है बहुत सही है। so what we have here, तो they are saying just like अगर एक पहला एलिमेंट है तो पहला and 8 का प्रॉपर्टी सेम होगा, and when you talk about your second one, then what we have next one is your 9 का सेम होगा, the third can be a 10, so it's just like सारेगामा पधनी सा, मार्क्स से वापस वही सारेगामा पधनी से is getting a rejoin। लेकिन again the side effect is somewhere if you see in the test book somewhere, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं हो रहा, because यहाँ पे we have the 2 elements sitting on the one bench which was not nice, and कैल्शियम के बाद ये वर्क करना बंद हो गया, the technique was not used over here। and now the next thing what we have is third scientist, and one of the best what we have the Mandy leaves over here। okay, so इसमें अगर कुछ आने का बोर्ड में अगर कुछ पूछे या फिर सेम में उनको कुछ बड़ा पूछने के, this will be a best question for your 3 ने 4-5 मार्क का भी आ सकता है। we are the merits over here, it has been a nice set over here, मतलब उसके जो खास बात है कि उसने just like बहुत अच्छे से बहुत बड़ा रेंज बना, और we have the Mandarin over here, and साइड इफेक्ट ये था कि उसने जो
what we have is हर एक मास ascending में नहीं जा रहा था, किधर एक तो descending में जा रहे थे, but it was nice. ये दोनों के comparison से इसका element का content बहुत कड़क था. And then we have the properties of the table. फर्स्ट टाइम किसी ने इतना बड़ा टेबल बनाया था, उसको बहुत अच्छे से शेप दिया था, बट ये तीनों में से ये बहुत अलग है. व्हाट वी हैव द फोर्थ साइंटिस्ट ओवर हियर, वी हैव एंड्रयू ओवर हियर, एंड इफ यू सी द फर्स्ट साइंटिस्ट जो बोलता है कि मास के हिसाब से नहीं, हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को एडजस्ट करना चाहिए. जस्ट लाइक इन द स्कूल, ऐसा कभी हुआ है क्या वजन के हिसाब से बेटा 40 किलो इधर, उसके पीछे 50-60, इज नॉट इट्स जस्ट लाइक योर रोल नंबर मैन, रोल नंबर 1 2 3 उसके पीछे. एंड दिस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सेड लेट अस वर्क फॉर योर रोल नंबर व्हाट वी हैव इन ओवर हियर. लेट मी शो ऑन द टेबल. ओके, दिस इज रियली अ नाइस टेबल ओवर हियर. नाउ first of all he is talking about the structure over here. The structure matlab it's just like if you take the million tower का example, we are the big compound or the million towers में कितने बिल्डिंग, how many wings we have to count it. Just like we see one table, लेकिन वो एक टेबल नहीं है, it's been a compound, 4 बिल्डिंग है उसमें, a 4 block. What we have is S block, D block, P block, and what we have is the last is the F block. So it's just like a compound जिसमें 4 बिल्डिंग है, जिसमें से एक बिल्डिंग का हमें कुछ यूज नहीं है, that is जो F, फिलहाल कुछ यूज नहीं है. And our focus should be on the S, D and the P. ये बहुत बड़ा explanation, I think इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. I will surely see this afterwards. And we have the less time over here. How to see the structure? Rows कितने गिनो, columns कितने गिनो, and then the next thing what we have is one shortcut. What I will say, जो पहला लाइन है ना इधर, ये सब का वैलेंसी एक है. Just like when you talk about your hydrogen, lithium, sodium, सबका वैलेंसी एक है. And when you talk about your last, what we have the helium, neon and something argon, ये सबका वैलेंसी 0. तो each and every strip. And one more thing, when you're going from the give reason में ये question आता है, maybe for the 2 marks or 3 marks, when you're going from the left to right, क्या increase हो रहा है? Obviously the atomic number 1 2 3 4. And when you going from the up to down, क्या increase हो रहा है? The atomic shell. इधर एक shell था, उसके नीचे 2 shell, उसके नीचे 3 shell, and many more things. ये 2 चीज नहीं और बहुत सी चीजें जो increase and decrease हो रही है from getting the left to right or the up to down. And then the next thing what we have, the next, ये बहुत बड़ा question. This is the biggest question of this lesson. And coming back, अगर उनको कुछ attach करना है, कुछ सस्ता देने का, तो we have the last page over here is the metallic and the non-metallic character. बहुत से लोग इसको हल्के में लेते हैं, but it's not hard over here. See this what we have. Metal, see, when we have an element, just like if you take the example of the hydrogen को stable होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है. And when you talk about your sodium, we have the 11 over here, वो एक इलेक्ट्रॉन stable होने के लिए दे रहा है. It's just the लेन-देन of the electron is getting how the valency is, and valency लेन-देन से तुम लोग को electronegativity and the positivity पता चलता है. तो if you need the valency and the लेन-देन of the electron, page number 60, 26 and 27 is going to be easy for you. And now what we have is this is fine. Lesson number 1, lesson number 2 is fine. Now coming back to the lesson number 3. Contain, okay, this is all of the chemical, it's really a nice lesson. Lesson बहुत बड़ा, but I don't think तुम लोगों को miss करना चाहिए. If you are asking me कि SEM में क्या करना चाहिए, तो I will just say lesson number 1 बहुत हल्का है, lesson number 2 is हल्का, the lesson number 3 में big piece बहुत आता है. You should never leave the lesson number 3. Lesson number 7 is a big piece. You can leave lesson number 5. And in the case you can leave ये दोनों में से कोई एक, but I will not say कि leave lesson number 3, 4 and 7 and 6 सबसे easiest lesson. I will say ये 4 lesson ये SEM के लिए करो. See, paper 40 मार्क है, with option 50 मार्क है. अरे 40 ही चाहिए तो 4-5 करो ना, काय को 7 कर देंगे. It's been my solution is been probability. Go and check your science 2 का paper. Okay. Going back to the lesson number 3, what we have here, lesson number 3. The first is the sign convention, जो कि again बोर्ड में कभी नहीं पूछा, but बोर्ड के 2 रूल्स है. एक क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है वो रिपीट हो सकता है, एंड दूसरा क्वेश्चन जो कभी आया नहीं वो अभी भी आ सकता है. So what we have is the sign convention over here. We have the plus sign. Plus मतलब product reactants. Okay, reactants में you just like पानी है, पानी में हम लोग ने अगर salt डाला है, maybe something sugar, तो water plus the sugar over here is the plus symbol over here. And then we have some arrow अगर ऊपर जा रहा है तो obviously is the evaporation, the gas going upside. Then we have the downside arrow, which means the precipitate, and उसका symbol is when we write in the short is the PPT.
Okay, next is your three states of matter. Is your GLS, is your gaseous, liquid, and the solid. When we have the triangle symbol, this triangle symbol stands for your heat. मतलब again the reactants of product. ये यारो यहाँ पे जा रहा है मतलब the reactants से product मिलने वाला है. When you see about triangle, you are heating. चाय बगैर heat क्या बन नहीं सकता. Just getting a water, just putting something at you. You can't just drink the tea man without the heating. So heat is important for some reaction, not for all the reaction. Okay, next is ये बहुत बड़ा question है. Sign convention can get 3-4 marks, and then let's talk about another biggest and the bestest question जो 4 mark के लिए भी आ सकता है and काट के 2 mark भी हो सकते हैं. So what we have here is this addition, decomposition, displacement, double displacement. Let us see the addition. Addition को मैंने यहाँ पे shortcut दे. This all are the shortcut given over here. A plus B is equal to C. A, we have the two reactants plus करके एक product मिलेगा. Then next is your decomposition. मतलब एक का breakdown करके will get something or two things. The reactant is one. Reaction होने के बाद we get the product or two things over this side. And then last but not the least, what we have is the decomposition. Oh, this is my favorite. Okay, displacement. Displacement and double displacement मतलब इधर से उधर मतलब इसका टोपी उसके सर उसका टोपी इसके सर is getting easy but displacement and double displacement में एक ही फर्क है. See in your textbook if you can answer this as one फर्क is your PPT मतलब precipitate, double displacement precipitate मिलेगा if you can see the reaction over here. And I don't think दोनों reaction दिया. पुराने textbook में ये lesson अच्छा था but it can be nice. Let me see this. Hold on. नहीं दिया उन लोग ने नहीं दिया बट एटलीस्ट दे हैव रिटर्न की प्रेसिपिटेट मिलता है. यहाँ पे उन लोग ने रिएक्शन नहीं दिया आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दे हैव गिवन द गुड रिएक्शंस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा सर्च करो. आगे द नेक्स्ट इज इधर है लेसन नंबर 4, वन ऑफ माय फेवरेट लेसन. आई एम द फिजिक्स टीचर एंड आई लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी मच. ये लेसन में क्या है? ये लेसन में बहुत से बिग पीस है. बिग पीस मतलब 4-5 मार्क के आंसर. We have the AC/DC motor over here. We have the generator over here, and the many things which are 3 mark के लिए just like a Kepler. We have the right hand thumb rule, a Fleming. Okay, this is the Fleming left hand, the Fleming right hand. Okay, motors के बारे में मैं अभी बात करूँगा. And the one thing जो हमेशा स्कूल इग्नोर करता है, that is your AC and DC करंट जिसका ग्राफ अब तक बोर्ड में नहीं पूछा. तो दिस आर द थिंग जो बोर्ड नहीं पूछता वो अभी पूछ सकते. दिस कैन बी द लास्ट ईयर. तो लोग ऐसे क्वेश्चन उठा के आई फॉरगॉट ये सेम का एग्जाम है. आई फॉरगॉट दिस सेम में कुछ भी हो सकता है. सेम में दे सकते. ओके नाउ whenever you are getting a big answer and we have to make this short. मुझे याद नहीं रह रहा. This is the whole page man. How can we remember this? The whole page given over. This is the whole page. The page number 56. But I feel the 3 lines are more than enough. If you want to see the page number over 56. This is the working. First of all, motor and generator में फर्क है. मोटर में just like what we have the fan over here. तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हो, फैन घूमता है, लेकिन जनरेटर में कुछ होता है. पहला वो टरबाइन घूमता है, then we get the electricity. Again I am saying in the motor what we are getting the electricity देखिए हम लोग को kinetic मिल रहा है. And in the generator, kinetic से हम लोग को electric energy मिल रहा है. Okay, let me explain how. Page number 56. I have some shortcut. I don't know सबको समझ में आएगा कि नहीं, but you have to compress. अगर तुम लोग सी पकाते सब है, when you are giving a one line, उसको 10 लाइन कोई भी कर सकते. लेकिन अगर उसको 10 लाइन दो and उसको बोलो compress करके 2 लाइन करो, it's really hard. Not each and everyone can compress this. Okay, we are talking about this. यहाँ पे मैंने करंट का सिंबल बना. Okay, the current over here is okay. The current A to the B, मतलब if you see the diagram, जो current है वो A से B के पास जा रहा है. And the next is the electric field is produced F and E, and what we have the AB is going up. The AB is going up. The BC तो obviously BC नीचे आएगा. And then it has been working like this. अगर ये A B C D है तो it's been working like this. अगर ये ऐसा हो गया तो पहले यहाँ पे A था लेकिन अब यहाँ पे C D है and AB is here. And this is a full rotation. तो वापस A इधर आएगा B इधर C इधर. That's all. तो you have to think, थोड़ा सोचो कि क्या हो रहा है. How the A and B is rotating. And last what we have, if you see यहाँ पे we have the split rings over here, X and Y. X E के बाजू में and what we have the Y F के बाजू में. But the thing is, rotation के बाद
what we have is it will be a change. तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर देन आई एम श्योर तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा. द वीडियो इज गेटिंग बिग. क्या पार्ट 2 पोस्ट करूंगे इसका? यस आई थिंक सो पार्ट 2 पोस्ट करना होगा. ओके so do see the another video because what time लगेगा पोस्ट करने में. Do see this whole video. Next video is coming. What we have the lesson number 5 is remaining, lesson number 6 and 7 is also remaining. So do wait for some time. The video is getting, and best of luck for you all. The 10th standard Maharashtra board Vivekanand school, 8th standard the video is coming. The 1 to 7 sorry it's 1 to 8 बहुत ज़्यादा question है. The 1 to 8 lesson. And 7 day students, surely I will put the videos of your 7, 8 and also the 9th standard physics. And that's all. Bye from my side. Bye and bye.